तो स्टैंडिंग पोजीशन में है क्यों? हाँ, फॉर्मल थी। रेडी है इंटरव्यू के लिए? Yes, sir. ओके, स्टार्ट। सो टेक योर सीट, प्रतिभा। Sir, I'm already sitting right now. ओके अच्छा, ठीक है। ओके, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। So, my name is Pratibha. I'm from Kathal, Haryana. I have completed my master's in statistics with quite good score, alongside with the bachelor's of science. And I my hobbies are yogas, and in my free time I like to cooking a lot. ओके, प्रतिभा, व्हाई यू वांट टू जॉइन द इंडियन स्टैटिकल सर्विस? So because when I pursued statistics in my bachelor's, so I did not know a single word about statistics. So when I started learning about it and the applications that statistics had in the wide area in private sector and in the government sector, that is with the help of statistics, how much our economy can grow with facts and figures. That's why I liked this job very much. So I ओके, thought of आर यू pursuing it. आर यू प्रिपरेइंग फॉर अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस? No, sir. ओके, एंड हाउ व्हाट वेंट रॉन्ग इन द लास्ट इंटरव्यू? Sir, in the last interview, I think just like now in starting, I got nervous for some time, and there were some situational questions, situation-based questions, in which I could not defend my answers, my point of view. So I think that was the point So this that year, I could. you are prepared. This time you are prepared. Sir, for situation based, yes, because actually my marks in written examination was uh, almost 10 or 12 more than boundary cutoff points. Okay, So okay, I could not make it okay, my. okay. Thank you. No problem. And why Haryana has the lowest sex ratio despite having the good per capita income? Tell me, give me some reasons. Sir, actually, the thought process of people in Haryana, the society that actually praises boys more than girls. And almost 80% of the population lives in villages where this thought is prominent, and that's why people think more of boys than of girls, because that's why they prefer boys over girls. So the sex ratio Haryana is more than the general in Okay, overall India. okay. Is there any improvement by the Government of India program Beti Bachao Beti Padhao schemes? So there is government has taken a lot of steps, not just the Beti Padhao Beti Bachao. Earlier there were so many criteria people used to check before the birth of baby, whether it is a boy or girl, which got terminated by the government along with the checkings on hospitals and canceling their licenses. So government has done, and it has approved a lot, because people are now educated and they understand that there is nothing nothing difference between boys and girls. So things are improving. Okay, suppose Government of India appoint you a officer on a special duty. Which district will you choose to improve the sex ratio? Sir, I think the sex rates are almost the same, so any district would be fine for me. Okay, good. Sir. Right. Pratibha, Yes, sir. can you define where we use statistics in our life? Sir, no, statistics we use a lot in our daily to daily life. First is whenever we do shopping, specifically for Karyana stores, we check before buying, taking a small sample or handful of samples when we buy rice, pulses, etc. One is this, and for example, just like we uh, buy milk, etc., then we check whether it is of good quality or not, and there can be many other examples. Okay. Suppose we have two data and we are required to find the measurement of dispersion, and we are required to compare the dispersion of these two data.
which measurement we use? Uh, test status in terms of Yes, statistics, sir. yes. For the variance, for dispersion, chi-square test we use, sir. No. My question is, suppose we have two statistical data, and Okay, sir. one data has less variance than another data. So the Okay, data which has less variance is less dispersed, more dispersed, or you can use any another measurement of dispersion rather than the variance. sorry, sir. I don't know. Right. Median is a positional measurement or numerical measurement. So can you repeat the question? Median is a positional measurement of central value or numerical measurement of central value. Okay, positional. So, sir, I could not understand the word you said. Median is a positional measure of central value. Why median is the positional measurement? So, because median is based on the ordered statistic, it is the middle value of the data. So that's why middle value. That's why it is called the positional value. Okay. Right. Can I add something? Yeah. It divides the whole data into two equal parts. Okay. So we can say that it is a Into two positional equal value. parts. Suppose we have 5 observations. Can you divide these 5 observations in two equal parts? The middle value will not be divided, sir. So we have to omit it, except the middle value, that is the median. Rest of the data can be divided into two equal parts. Okay, so rest of the data is divided in two equal part, or the whole data is divided into two equal part? Here, whole data cannot be divided, sir, because the middle value you cannot divide it into half there and half there. So Okay. Mode is numerical measurement of central value or positional? mode, I think it is position. Sorry, sir. Okay, right. Now we have 5 measurement of central value: Yes. arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, median, and mode. Yes, sir. Out of these 5 measurement, which is ill-defined? It is ill-defined. Right. Sir, for the ill-defined concept, I didn't think of much, but for every average, every measure of average, there are pros and there are consequences. Not every measure is can be applied to every situation. Every measure has its advantages on some scale, and every measure has its disadvantages on some scale. So I don't think any of the measure can be categorized as the ill-defined measure. Okay. What is the difference between the random sample and observed sample? So random sample is observed sample is actually the actual observed values of the samples, and the random sample is you can say that randomly chosen values of the sample, but observed sample we take actually from the from whatever sampling we are doing. In random sampling, it sorry, sir. Pratibha, it's I'm not okay. able. It's okay. It's okay. Right. Okay. My next question is, do you heard about the likelihood function? Yes, sir. Likelihood function is a function of sample observations or the function of parameter? So it is a function of parameter. Only the function of parameter. Yes. Right. Okay, Pratibha, as a woman, Yes. how many more advantage you get compared to men? Sir, Yeah, if any you see women, at I'm not asking a specific. yes, sir, I understood in general terms. Uh, if you see in the societal views, we have comparatively lower advantages, or you can say we are in disadvantageous position in general. But if you see on constitutional view, men and women are equal. And if you see in the government policies, women have more advantages than women. For example, 33% reservation in the elections,
And whenever if you have to just like another option is when we apply for some exams, uh, for example this UPSC ISS exam, girls don't have to pay any fees, but boys have to pay fees. So and there can be many other examples where we can say that in government policies women have more advantages than men for the empowerment point, but in front of constitution or law they are equal. Okay, good, very good. And what is the GDP of Haryana? The GDP of Haryana last year I saw, sir. This time I did not so because the What GDP was the quarterly last year data? Last year data. last year data I actually right now don't remember, sir. Actually I am not able to remember the numbers, actually exact numbers. So almost it is always approximate. Okay, So okay, I no problem. even if I try I got confused, sir. No issue, no issue. How GDP data has been compiled? Yes, sir. How the MSPI Okay. compiled the GDP data? Uh, can you repeat the question, sir? How MSPI compiled the GDP data? How much we compile the GDP data? Are you, Sir, are you aware of the method using to calculate the GDP by MSPI? sir, mostly calculate data with GVS. Calculates data with GV by calculating the gross value added, then adds them uh, uh, with field operation division. Okay. What is the Haryana's MMR, mother mortality rate? Sorry, sir, I don't idea what. Oh, I did not see the numbers. okay. Your hobbies are yoga and cooking. Yes, sir. And what is difference between yoga and meditations? Sir, actually, meditation is a part of yoga. Yoga is not just the asanas that is widely accepted by the world, which considers that yoga is only the positions that is, uh, you can say, spread in the world. Meditation, asana, there are other things, yam, niyam, etc. There are a lot of terms, a lot of functions that are considered under yoga. Is yoga is a part of Ayush? What, sir? Ayush, AYUS. Ayush. Hmm. Ayush is, sir, Ayush is the medical terms, medicinal terms. I don't think yoga is a part of Ayush. Ayush is about the medicinal terms or the surgical terms that for different areas like Afghanistan, Indian is Ayurvedic, the Ayurvedic thing which is uh, used to for use for health, improvement of health, and there are other Are you, are, regions are you practicing yoga daily? right now. No, sir, because I was taking some medicines. I have some health issues which could not help. So for for last 2 months, yes, I was doing. But for 2 months ago, because I started some medicines, I had some problems, so Okay, okay. I skipped. No problem. Get well soon. And last questions from my side. And what is your strength by which UPSC will recommend your name to the government of India? So the calculations, because I understand numbers quite good, although I cannot keep remembering them or cram them, but I understand them how numbers explain themselves. I understand them. I can manipulate them very good, and uh, so I can work quite well in analysis terms of the data. Okay, fine, sir. Okay, Pratibha, can you Yes, sir. define the basic difference between frequency data and probabilistic data? So frequency data is observational data. That is the number of data, how many times it is repeated. And second one is the probabilistic data is actually not the actual data that is observed, but it is based on the patterns or distributions. That is based on probability. Probability. That is what is the probability that this data will happen. It is based on distribution or assumptions. Okay, suppose we have a fair dice and I throw it. Now, what is the probability that 6 will come?
So 1/6. What is the meaning of this thing? Sir, this means is if a die is thrown 6 times, there is a probability out of 6 times, one time 6 will appear. What is the meaning of this thing? What is the sense? Okay. 1/6 is the probability. That means if we 1/6 means if we in general sense, if we draw, if we throw the die out of out of every 6 times, one time 6 will appear on Six. the die. Yes, sir. Right, right. Okay, Pratibha, now your formal interview has been finished. If you have any particular questions, you may ask. For particular questions, sir, first is the feedback, and you can explain ये तो मैं where I आपको can फॉर्मल improve. पूछ रहा था। यदि यूपीएससी में आपको ये क्वेश्चन पूछ ले तो आप नो थैंक यू करके वहां से चले जाएंगे, राइट? Yes, sir. हम लोग बात कर, लास्ट इंटरव्यू में कितने मार्क्स थे आपके? Sir, 110. कम थे मार्क्स। बहुत क्या कम थे। क्या गड़बड़ क्यों हो रहा था और आप एनालिटिकल क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पा रहे थे? Sir, actually, I gave, let me tell you what was the question. So they asked me about the sex ratio, because at that time, National Family Health Service fifth round was completed, reports were published. So I crammed the numbers for the total data for India, but that I explained. After that, they asked me the question, do you know about the rural and urban areas sex ratios? राइट राइट। Although I remembered, I crammed it very well, because it was just 2 or 3 days before the report came. But I did not answer because I was for 2 or 3 numbers. I remember 980 or something, 1000 and something, but I wasn't sure about the actual figures. So I said that I am not able to recall. So they tell them myself, let me tell you, this is the rural number, this is the urban number. Can you read it now? So I said, yes, ma'am. After that, they asked me, now that you know that this is the rural number, this is the urban number, although we see that in rural areas, societally, what the mindset of people is boys are better than girls, then how is this possible that rural areas sex ratio is higher than urban areas? I could not answer this question, sir, at that time. Okay, normally What they was ask this? an analytical question. That's why Yes, sir. So they gave me, yes, sir. Even if I dosed the question earlier, but they gave me the numbers by themselves and then asked me the question. They were like, वो थे कि हाँ हमें ये चीज तो पूछनी ही पूछनी है। उसके बाद एक क्वेश्चन और था सर, वो मेरे से पूछा गया था कि जैसे जैसे डिग्री बढ़ती है, मतलब जैसे लड़कियां ज्यादा पढ़ती हैं तो उसके हिसाब से जो फर्टिलिटी रेट है वो कम होता जाता है। क्या आप इस चीज से अग्री करते हो या नहीं करते हो? तो मैंने उसको बोला था कि मैं अग्री नहीं करती हूँ। तो उसके बाद मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी, उसके बाद उन्होंने काउंटर क्वेश्चन किए, उसके बाद फिर मैंने एक्सप्लेनेशन दिए, काउंटर क्वेश्चन किए, वो चीज चलती ही रही थी और फाइनली मेरे को सॉरी सर कह के खत्म करना पड़ा। वो आपने जवाब गलत दे दिया। नहीं, अगर एक्चुअली अगर जैसे पढ़ती है ना डेटा में लिखा हुआ है। फीमेल, तो फर्टिलिटी कम ही होती है, तो अच्छा, इसीलिए। बाय नंबर्स वो होती है, वो कोरिलेशन था, वो चीज मैंने हाँ, एक्सेप्ट की। नहीं, तो जैसे अगर मैं आपको ये सोसाइटी, कहना है जो वो यस सर, कंप्लीटली डिपेंड नहीं करता, लेकिन ज्यादातर तो हाँ देखिए यही बोला था सर आप ज्यादा मैंने। दिन स्टडी करेंगे फिर जॉब करेंगे तो तो फिर तो होता है। फर्टिलिटी। तो यस एक सर, मैं वही एक्सप्लेन करना चाह रही प्रतिभा, थी। यस सर। प्रतिभा बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है आपको देख के कि आप हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हैं बोलने में देन द इंग्लिश। तो आप थोड़ा। सर मेरी तो हिंदी भी खराब है। मेरे घर वाले बोलते हैं जब मैं हिंदी नॉर्मली किसी से बात करती हूँ ना तो बहुत ज्यादा फास्ट बात करती हूँ, हाँ, मैं तो वही इसीलिए मैं आपको हिंदी वही छोड़ के वही मैं समझा इंग्लिश रहा की हूँ तरफ आपको। जा रही मैं वही हूँ। यस समझा रहा सर। हूँ। 2 मिनट मुझे दीजिएगा, आपको हम टाइम देंगे। यस आप जब जैसे मान लीजिए, आपको क्या लगता है कि आपको हिंदी में ज्यादा अच्छे से आप सोच पाते हैं कि इंग्लिश? सर एक्चुअली मैं सोचती तो मेरे तो हरियाणवी है सर, ठेठ हरियाणवी है, तो वो चेंजेस हो के इंग्लिश तक पहुंचता है सर। अच्छा, हिंदी में नहीं पहुंचा है तो अभी? मतलब हिंदी तक हो जाता है, बट द क्वेश्चन इज, जैसे मैंने पिछले एक दो फ्रेंड्स जिनका मेरा पहले हो चुका है ना, तो उनमें से कईयों ने बोला कि हमें अलाउ कर दिया था हिंदी में बात करने के लिए, ओके, कई बोलते हैं कि हमें अलाउ नहीं किया था, इंग्लिश में ही आंसर देने पड़े। मतलब मैं ओके, मतलब मैंने एक्चुअली जयपुर से कोचिंग ली थी ठीक है। 3 4 साल पहले,
जस्ट मेरी मास्टर्स खत्म होते ही। तो वहां पर एक सीनियर थे जिनका अभी 23 में हुआ है, वो उससे पहले 4 बार इंटरव्यू दे चुके थे। उनको हर बार ऐसा होता था कि वो उनको हिंदी अलाउ ही नहीं करते थे, वो इंग्लिश में कंफर्टेबल थे नहीं। ओके, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इंग्लिश में ही करूँ। वेरी गुड, लास्ट एक्सीलेंट। लास्ट टाइम, यस सर, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे साथ भी यही हुआ था। तो मुझसे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे एमएसपी से रिलेटेड, तो उसमें कुछ टर्म्स थे जो, क्योंकि मैं पढ़ती तो हिंदी में ही हूँ ना, उसको ओके, ट्रांसलेट करना होता है। तो मैं जब एक्सप्लेन कर रही थी तो कुछ वर्ड्स ऐसे थे, मेरे को नहीं पता था उनकी इंग्लिश एट दैट टाइम, मैं एकदम से नहीं बना पाई। तो मैंने उनसे पूछ लिया था कि सर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हिंदी में दे सकती हूँ। तो उस टाइम पे उस क्वेश्चन के लिए उन्होंने यस कर दिया था, तो मैंने आंसर दे दिया था। उसके ठीक है, बाद अगर वो क्वेश्चन मेरे से हिंदी में पूछ रहे हैं तो मैं हिंदी में आंसर कर रही थी, क्योंकि वो क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछ रहे थे। ओके, एक सर थे वो हिंदी में ही क्वेश्चन पूछ रहे थे, एक सर थे जो इंग्लिश में पूछ रहे थे। ओके, ओके। थोड़ा सा जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि जब आप बोल रहे हो ना, तो हाँ थोड़ा जी सा सर। आप पीक ले रहे हो, हाइपर सिचुएशन आ आवाज रही की है, टोन भी ज्यादा हो जाती टोन थोड़ी सी ज्यादा ज्यादा हो रही हाइपर हो रही है। मतलब आप, ऐसा लग रहा है कि आप दिल से बोलना चाह रहे हो, मतलब आप समझ रहे है, हो, जज्बाती हो जाती है। जज्बात यस हो सर। जा रहे हो, वो नहीं होना है, ओके वो सर। नहीं होना है। वो आपको वही एक आपका एक छोटा सा, ब्यूरोक्रेट जैसे नपे तुले बोलना जो चाहते ब्यूरोक्रेट जब ब्यूरोक्रेट्स बात करते हैं ना, तो उनको यस। चाहे अंदर गुस्सा है, खुशी है, हैं। एक्साइटेडमेंट है, वो एक्सप्रेस नहीं होने देते। तो थोड़ा सा ये टच उन लोगों को चाहिए होता है। तो आप में जो, वैसे तो चलो ठीक है, अब ठीक है, वो कोई इशू नहीं है उतना। देखो, स्टैट्स की नॉलेज वो उतनी ज्यादा नहीं पूछेंगे। आपका थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज में थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम लगा। कुछ कुछ आंसर है जो आपने सही नहीं जवाब दिया है। चलिए खैर, लीव सर इट, वो एक अलग बात मैं है। कर लूंगी सर, अभी 3-4 दिन है। हाँ, 3-4 दिन आप एक बार बेसिक स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा पढ़ लीजिए। यस। दूसरा, आप जब बोलेंगे ना तो आप आराम से बोलने की कोशिश करिए। आप, यस। जैसे मान लीजिए किसी चीज को आप 10 सेकंड में बोलना चाहते हैं, आप उसको 12 सेकंड में बोलिए। जो यस। 20% आपका अगर स्पीड कम हो जाएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा, हिंदी इंग्लिश वाला प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, और आपको 2 सेकंड सोचने का भी मिल जाएगा। गलतियां भी कम होगी, आप तेज समझिए, यस। से आप गलतियां। समझिए। अब आप एक काम करना, जैसे 4-5 दिन है आपके पास, अगर कोई भी आपके पास रहता है, आप उसके यस। सामने बैठो, उसको बोलो भाई मेरे से रैंडमली स्टैट्स के क्वेश्चन पूछो या रियल लाइफ के क्वेश्चन पूछो। और आपको जवाब देने में ध्यान नहीं देना है, इस बात पे जवाब देना है कि 10 सेकंड की चीज को मैं 12 सेकंड में कैसे बोलूं। आप दस यस। सेकंड की बात को 8 सेकंड में बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बोलना 12 में है। तो उससे आपको समय मिलता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, आप हिलते नहीं हो। ये बस यस। एक छोटा सा आपको इंप्रूवमेंट देना है। अगर आप 2-3 दिन में दे पाए तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए, अभी बाकी तो ठीक है। अभी क्या हेल्थ की क्या इशू हो गई अब? सर एक्चुअली मेरे को पीसीओडी हो गया था 3-4 महीने पहले, तो फिर उसकी मेडिसिन चल रही थी। चलिए कोई ओके, नहीं, उसका आपको एडवांटेज कोई ऐसी नहीं है। और बाकी यस सर। थोड़ा सा ना ऑफिशियल स्टैट का कुछ डेटा ठीक होना चाहिए आपके। हाँ, यस थोड़ा सर। सा उस पर 2-3 दिन काम कर लीजिए। ग्रुप पे शायद होंगे ना इंटरव्यू वाले हाँ, group पे। इंटरव्यू वाले ग्रुप पे हैं आप। मैं शेयर किया हूँ, यस सर। देख लीजिए। वो थोड़ा जैसे मैंने योगा योगा पूछा था, तो आयुष का ही तो पार्ट होता नहीं योगा। ओके आयुर्वेदा, सर। नेचुरोपैथी, योगा, सिद्धा, और फिर यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी, अल्टरनेटिव मेडिसिन है। ठीक है। ठीक है सर। तो ठीक उसमें है, थोड़ा सा वो फैक्ट बाकी आपका अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिल्कुल, फैक्चुअल मिस्टेक से ज्यादा आपके मार्क्स कटते नहीं। हाँ, आप गलत बोल ओके। रहे तो एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं आता तो ना बोल ना दीजिए। बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे आपको। आपके आपका आपके जो मेन रीजन जो मुझे लग रहा है कि लास्ट जो आपका नंबर कम रहे हैं, लैंग्वेज उसका प्रॉब्लम। लैंग्वेज भी, और आप थोड़ा सा जल्दी बोल रहे हैं, मतलब थोड़ा आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यस सर। आपको, मत भेजिए। जब हम आपको देख रहे हैं तो भी हमें ऐसा लग रहा है जैसे वो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, आपको सांस चढ़ रहा है। आप समझ रहे हो? नहीं, वो आदत है नहीं, शुरू से तेज हाँ, बोलने की। नहीं, वहां पे आपको वो मैंने बोला 10 सेकंड की बात आपको कंट्रोल 12 करना। में बोलनी है बस। सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। तो 10 का 12 में बोलना है आपको। आप थोड़ा जल्दी कोशिश कर रहे हैं, तो वो थोड़ा टाइम लेंगे ना आप, तो आपको 1 सेकंड सोचने का भी मिल जाएगा कि मुझे बोलना क्या है। आपका डेट क्या है इंटरव्यू का? सर 16 आफ्टरनून। ठीक है, आफ्टरनून सेशन, 16 आप अच्छे से दीजिए, 100% हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, अभी हम लोग हैं ग्रुप में, तो अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई आपको हमसे हेल्प चाहिए, तो यू कैन आस्क एनी टाइम। कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, कुछ भी ओके। पूछना आप पूछिए। ओके डियर, ऑल द बेस्ट, ऑल ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक थैंक